a very warm welcome to thorough newspaper analysis for 27th of March, which is brought to you by LawSikho. Now let's proceed for the agenda for today. At the very outset, we're going to take up some important national and international updates. This is going to be followed by legal news update. We have one for today. And at the very end, we have two editorials. पहला जो editorial है वो बात करता है सुप्रीम कोर्ट की फ्राइडे की रूलिंग में, जिसने कोर्ट ने ये बोला है कि अगर आप किसी बैंड एसोसिएशन के मेंबर हो तो बाय वर्च्यू ऑफ दिस मेयर फैक्टम ऑफ बीइंग अ मेंबर you are going to be considered an offender under one of the provisions of UAPA. And secondly, we are going to take up the editorial regarding the Supreme Court's inclination for considering alternative ways of execution of capital punishment other than hanging a person to death. Now with this, let's start with the TNF for today. पहली जो update है, this is with respect to Grammarly getting its new CEO. Grammarly जो कि एक सैन फ्रांसिस्को कंपनी है, सैन फ्रांसिस्को बेस्ड कंपनी है, वो प्रोवाइड करती है सर्विसेज इन राइटिंग इंग्लिश इन टर्म्स ऑफ ग्रामर, पंक्चुएशन, स्पेलिंग, प्लेगरिज्म चेक. उन्होंने अनाउंस किया है इंडियन ओरिजिन राहुल रॉय चौधरी एज इट्स न्यू CEO फ्रॉम May of this year. Currently, he is serving as the global head of product. With this, we've come to the next update. तो हाल ही में DNP एडवाइजरी उन्होंने IPL को एनालाइज किया एंड उन्होंने ये रिपोर्ट किया है दैट द क्रिकेट टूर्नामेंट IPL इट वाज इंडियाज फर्स्ट यूनिकॉर्न विद अ वैल्यूएशन ऑफ $1.1 billion in the year 2008. It has now become a decacorn with a valuation of $10.9 billion एंड इस एनालिसिस में और इस रिपोर्ट में बहुत सारे फैक्टर्स को कंसिडर करा गया है, जैसे कि ब्रॉडकास्ट राइट्स कितने थे, स्पॉन्सरशिप से कितना बंच ऑफ मनी मिला. सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स और फैक्टर्स वर एनालाइज एंड दिस इज व्हाट द रिपोर्ट स्टेटेड. With this, we've come to the next update, which is coming from the Parliament of India. तो हाल ही में लोकसभा ने Appropriation Bill of 2023 को पास किया है, जो कि अब गवर्नमेंट को ऑथराइज कर देगा टू विड्रॉ अ सर्टेन सम ऑफ मनी फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया फॉर इट्स वर्किंग और फॉर implementation of programs and schemes which are presented as part of the supplementary expenditure for financial year 23. I have a question and I request all of you to please put down your answers in the comment section. Which provision of the Indian Constitution deals with the money bill? Which provisions rather they deal with money bill from the Indian Constitution? Please put down your answers in the comment section. Now with the next update is with respect to the first Urban Climate Film Festival. तो हाल ही में National Institute of Urban Affairs is going to organize the first Urban Climate Film Festival under U20 engagement events. There is a curated selection of 11 films from 9 countries जो कि showcase होंगी at different cities in different cities, and इसका purpose ये है ताकि हम impact of climate चेंज इन ऑन लाइफ इन सिटीज़ को दर्शा सकें, उसके रिगार्डिंग एक वाइडर अवेयरनेस क्रिएट कर सकें विद इन दी मासेस. एंड विद दिस वी हैव कम टू द इंटरनेशनल सेगमेंट फॉर टुडे. फर्स्ट अपडेट इज विद रिस्पेक्ट टू एन इंपॉर्टेंट डे जो कि 26 मार्च को ऑब्जर्व होता है, विच इज़ पर्पल डे ऑफ एपिलेप्सी. सी एपिलेप्सी एसेंशली हम इस डिसऑर्डर की बात करें तो दिस इज़ ए न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जिसमें जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसमें देयर इज सम सॉर्ट ऑफ अ रप्चर एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस जो इससे अफेक्टेड पर्सन्स होते हैं उनको सीजर्स आते हैं, देखने को मिलते हैं, एंड इससे उनके नॉर्मल फंक्शंस जो है उसमें काफ़ी बाधाएं आती है. एंड पर्पल डे इट इज़ अ ग्लोबल ग्रास रूट इवेंट दैट वाज formed with the intention to increase worldwide awareness of epilepsy and to dispel common myths and fears of this neurological disorder. अगर हम इसकी हिस्ट्री में जाएं तो why Purple Day is celebrated and how it all started. See, there was a woman in Canada. She started this whole campaign and eventually the world took over, realized its importance, and now it is observed on 26th of March every year. Another update in the international segment is that Canara Bank, it has sold its stake in the Russian joint venture Commercial Indo Bank LLC to the other joint venture partner, which is State Bank of India, for about rupees 1 to 1.29 crores. And with this, we have come to the legal update segment for today. See, essentially, Supreme Court ने recently reiterate किया है, reaffirm किया है कि अगर circumstantial evidence पे rely करने के बाद किसी क्रिमिनल केस में 2 व्यूज़ पॉसिबल हैं और उनमें से एक व्यू जो है वो अक्यूज़ को फेवर करता है,
तो हमें या कोर्ट को वो व्यू ऑप्ट करना चाहिए विच फेवर्स द अक्यूज्ड एंड नॉट द वन विच गोज अगेंस्ट द अक्यूज। एंड ये प्राइमरीली इसलिए है बिकॉज जब हमारे पास डायरेक्ट एविडेंस होते हैं तब तो प्रोसिक्यूशन इज एबल टू डिस्पेल इट्स बर्डन जो उस पर कास्ट होता है विच इज़ टू प्रूव द गिल्ट ऑफ द अक्यूज बियॉन्ड रीजनेबल डाउट एंड देयर इज नो शैडो whatsoever which is cast on any doubt is cast on this particular burden which is thoroughly discharged। but जब circumstantial evidence की बात आती है तो सी डायरेक्ट एविडेंस तो है नहीं, तो हमारे पास मल्टीपल व्यूज में भी पॉसिबल। इवन जब प्रोसिक्यूशन ने बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव भी कर दिया तब भी देयर माइट बी सम अमाउंट ऑफ दिस थिंग कि दो व्यूज पॉसिबल हो सकते हैं। तो उस रिस्पेक्ट में हमें उस केस में अक्यूज को जो फेवर कर रहा है वो व्यू ऑप्ट करना चाहिए। द नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर केस इज प्रदीप कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। With this, now let's proceed to the first editorial for today, which is guilt by association. And at the very outset, let's understand the why of this article. See, recently Supreme Court ने Friday को in fact अपने 2011 के 3 decisions को overrule किया। The name of these cases is Arup Buyan versus State of Assam, Indira Das versus State of Assam, and State of Kerala versus Rani। इन तीनों डिसीजंस का जो कलेक्टिव अगर हम क्रक्स देखें तो ये था कि mere membership of a band association, it is not sufficient to constitute an offence under the Unlawful Activities Prevention Act, which is popularly known as UAPA, or TADA, which is Terrorism and Disruptive Activities Prevention Act, unless it is accompanied with some overt violent act। तो merely being a member of a band association इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक offender हो, एंड आप एक offender तभी माने जाओगे जब आपका criminal intention था एंड देयर वाज अ फिजिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ योर क्रिमिनल इंटेंशन, मतलब कि आपने कोई overt act किया है उसके रिस्पेक्ट में। Now see, let's understand what the Supreme Court has essentially done in its Friday's decision। तो Supreme Court ने of course इन तीनों decisions को तो overrule किया ही है, मीनिंग देयर बाय सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो हेल्ड किया वो ये है कि अगर आप किसी ऐसी बैंड एसोसिएशन का मेंबर होते हो तो बाय वर्च्यू ऑफ द मेयर फैक्ट ऑफ बीइंग अ मेंबर इटसेल्फ यू आर गिल्टी ऑफ वन ऑफ द सेक्शंस ऑफ द यूएपीए, जो अभी हम डिस्कशन में लाएंगे। नाउ सेकेंडली जो सुप्रीम कोर्ट ने ये किया है कि उन्होंने सेक्शन 10 क्लॉज ए सब सेक्शन 1 ऑफ द यूएपीए उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को अपहेल्ड कर दिया। ये पर्टिकुलर सेक्शन ये कहता है कि वेर एन एसोसिएशन हैज़ बीन डिक्लेयर्ड अनलॉफुल बाय अ नोटिफिकेशन by the government, then any individual who continues to be a part of such an organization will be punished with imprisonment of up to 2 years and shall be liable to fine। तो 2 साल की jail term, imprisonment and liability to pay fine which is also mandatory, ये attract हो जाती हैं just because you are a member of an unlawful association। So now let's understand court की इस ruling के पीछे की उनके primary grounds क्या थे। तो फर्स्ट ग्राउंड जो एज इज मेंशन्ड इन द एडिटोरियल वो ये है कि फर्स्टली द कोर्ट एक्सेप्टेड द स्टेट्स आर्ग्यूमेंट दैट देयर आर सफिशिएंट सेफगार्ड्स in the stringent UAPA framework and every effort is made to ensure that every member of the association is made aware of the fact that such association is declared an unlawful assembly, and also that the government argued that the declaration of an organization as unlawful, it is a product of a robust adversarial system or process wherein ample opportunity is given to the organization to appeal to the better sense of a judicially trained mind in order to justify कि हमारी जो association है उनके aims, उनकी activities ये सारी lawful है and this is within the constitutional framework of our country। So इस respect में जो author है उनका ये कहना है कि the line of reasoning, it allows a troubled trend where the court extends the executive's power, giving it the benefit of every doubt। जो सेकेंड प्राइमरी ग्राउंड था जिसमें जो एडिटोरियल में मेंशन है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि जो अर्लियर 2011 के डिसीजंस हैं उनमें यूएस लॉ पर प्राइमरीली काफ़ी सारे चंक एक पोर्शन रिलाई करा गया था, और सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि since the US laws are in contradiction to the scenario in question in India, तो हम रिलाई नहीं कर सकते उन पे। तो इस रिस्पेक्ट में एडिटोरियल के ऑथर का ये कहना है कि ironically the court cites a string of paragraphs from rulings that expanded on personal liberty, including the landmark Menaka Gandhi versus Union of India, to hold that free speech in the US is unrestricted, unlike in
India. Now, the editorial leaves with the question that how the state can charge an individual for being a member or for its membership. What evidence does it have to bring before the court? These are the questions which are to be addressed. Now, with this, let's proceed to the next editorial, which is on the mode of capital punishment. So let's understand the why of this article at the very outset. Essentially, हाल ही में CJI ने the Honorable Chief Justice of India Dr. D.Y. Chandrachud उन्होंने गवर्नमेंट को कहा है कि you go and look for alternative methods of execution of capital punishment. मतलब कि जब किसी पर्सन को हम डेथ पनिशमेंट देते हैं तो उसका जो एग्जीक्यूशन का तरीका है वो अब तक जो हम फॉलो करते आए हैं वो है हैंगिंग. So you hang a person and then the person dies, and that would mean that you've executed the sentence of death. But अभी recently CJI ने government को कहा है you defend the practice of hanging by neck as a means of death penalty and also look for alternative ways जो science and technology ने अभी हमारे सामने रखे हैं which may be more dignified and humane. Now let's understand why the history or background of this particular case कि CJI के इस पर्टिकुलर ऑर्डर की बेस क्या थी. तो एसेंशली 2007 में देयर इज एन एडवोकेट बाय द नेम ऑफ ऋषि मल्होत्रा. ही फाइल्ड अ PIL सीकिंग अ मोर डिग्निफाइड वे टू एग्जीक्यूट द कैपिटल पनिशमेंट, and the PIL essentially argued that a convict whose life has to end because of sentence should not be compelled to suffer the pain of hanging. This PIL also challenged the constitutional validity of section 354 subsection 5 of the CRPC. अगर हम इस सेक्शन की बात करें तो एसेंशली ये दिस सेक्शन प्रोवाइड्स फॉर द फैक्ट दैट when any person is sentenced to death, then the sentence shall direct that he be hanged by neck till he is dead. Now, the constitutional validity of death penalty, agar that is, if we have a look at it, so you would also know that that was ascertained or established or upheld in the case of 1982 Bachchan Singh versus State of Punjab. Now see 2017 में ये PIL फाइल हुई. उसके बाद a 3-judge bench of Supreme Court comprising then Chief Justice of India जो कि थे दीपक मिश्रा, Justice A.M. Khanwilkar who is now retired, and Honorable now the Chief Justice of India, उन्होंने नोटिस इशू किया बट अब तक ये केस लिस्ट आउट नहीं हुआ था एंड अभी हाल ही में हुआ है जिसमें ये पर्टिकुलर ऑर्डर आया है सुप्रीम कोर्ट का. Now as far as the response or the stand of the center is concerned, तो सेंटर ने अपने जनवरी 2018 के एफिडेविट में ये कहा है कि गवर्नमेंट submitted that death by hanging, it was the only viable option to execute a death warrant, but had also sought time to examine other methods also, जो कि मे बी हमारे लिए सही हो, seeing कि बाकी सारी कंट्रीज़ में क्या क्या फॉलो होता है. इस रिस्पेक्ट में एक लॉ कमीशन रिपोर्ट भी है विच इज़ 187th रिपोर्ट ऑफ 2003, जहाँ पे लॉ कमीशन ने रेकमेंड किया था कि सेक्शन 354 सबसेक्शन 5 ऑफ CRPC शुड बी अमेंडेड to provide for lethal injection until the accused is dead. ये जो रिपोर्ट है, it also suggested that the mode of execution should be left to the discretion of the judge who should hear the convict on the question before passing an order. तो essentially law commission ने दो चीज़ें recommend करी. एक तो कि you go and amend the particular section of the CRPC जहाँ पे execution as a method of hanging as a method of execution of capital punishment was provided, वहाँ पे आप ये insert कर दो lethal injections can also be administered to a person ताकि he can die peacefully. And secondly उन्होंने कहा था कि जब किसी person को, and ये जो मेथड है ना कि कौन सा मेथड हम फॉलो करेंगे, ये कोर्ट की डिस्क्रिप्शन पे छोड़ देना चाहिए कि यू डिसाइड. एंड कोर्ट कैसे डिसाइड करेगा, जब सेंटेंस दी जा रही होगी तो अक्यूज कैन बी आस्क्ड अ क्वेश्चन कि वुड यू वांट टू हैव विच मेथड ऑफ एग्जीक्यूशन of the death sentence. So that is about it. Now let's have an understanding of the situation world over. See, as far as Amnesty International report is concerned, 55 countries still have death sentence in their statute books, and death by hanging is the most prevalent method of execution, especially उन countries में जो पहले formerly ब्रिटिश कॉलोनीज रह चुकी है. एज फार एज यूनाइटेड स्टेट इज कंसर्न, तो एक फिफ्थ स्टेट है वहाँ पे. देयर इज गोइंग टू बी अ फिफ्थ स्टेट इन यूनाइटेड स्टेट्स विच इज मूविंग
or bringing back firing squad, which is a method that seems more practical because the lethal injection drugs hain, they continue to be in short supply. So as far as US की situation is concerned, सो सी वहाँ पे असेंशियली लीथल इंजेक्शंस जो हैं वो दिए जाते हैं एंड वो इट इज़ गिवन इन एवरी स्टेट दैट अलाउज डेथ पेनल्टी, जो कि विच इज़ द नंबर वहाँ पे हम देखें तो दैट इज़ 27 स्टेट्स एंड देयर इज़ अमेरिकन समोआ विच इज़ असेंशियली एक uncharted US territory है, which is a group of islands and it is unregulated as of yet. So US की सिचुएशन में क्या है कि एक तो वो मेथड क्या यूज़ करते हैं, दे administer injection as a method and वो कितनी states में 27 states follow that. उसके बाद जो second method है which is used popularly in US is electrocution and as far as lawmakers in Idaho they are concerned, so they passed a bill last week seeking to authorize firing squads as a method, and this particular method is currently allowed in Mississippi, Utah, Oklahoma and South California. See, as far as China is concerned, तो China में shooting squad is a method that is being operated or made use of. एंड अगर हम सऊदी अरेबिया की बात करें तो वहाँ पे तो एक बहुत ही बारबेरिक तरीका है विच एज टू माई understanding it's beheading, and apart from other methods these are also employed. As far as India is concerned, तो India में hanging by as a method is used, and apart from that the Air Force Act of 1950, the Army Act of 1950 and the Navy Act of 1957, they provide for an offender to be hanged by neck until he is dead or to suffer death by being shot to death. So this is with respect to the jurisprudence as far as the methods of death or hanging this is concerned. Now let's understand what are the challenges that injecting these injections or administering lethal injection is concerned, because that is also an alternative जो कि लॉ कमीशन ने भी रेकमेंड किया था. बट सी यूएस में क्या हो रहा है कि देर आर टू फोल्ड दिस थिंग. सो फार्मास्यूटिकल जो कंपनीज है उनका ये कहना है कि जो केमिकल्स इस पर्टिकुलर इंजेक्शन के कॉकटेल को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं वो केमिकल्स वी वुड रैदर लाइक टू यूज देम फॉर सेविंग लाइव्स इंस्टेड ऑफ टेकिंग लाइव्स. तो इसके कारण क्या हो रहा है कि देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ इट देयर. सो दिस इज ए कंसर्न विच इज टू बी एड्रेस. And apart from that, firing bullet at the heart, it is stated to be less painful and more viable because the person bleeds to death, and it makes the person unconscious and the person quickly dies. So that is also one of the methods which is discussed in the editorial. Now with this we have come to an end of our TNA for today. The free study materials and TNA slides are available on the Telegram channel. You may use the link in the description or scan the barcode. You may get in touch with LawSikho using these 2 point of contacts. And apart from this, the quiz for Saturday's TNA, it is made available in today's video's description. Kindly attempt the questions, and the question that I asked in today's video, please put your answers in the comment section for the same, and thank you for being with us.